heart. 마음이 흐르기 시작합니다. Your heart begins to flow. 청소년들이 고립되는 순간 The moment that the youth are isolated, 더 이상 아무것도 할 수가 없었습니다. they can do nothing about it. 그러나 마음이 흐르고 대화가 되고 소통이 되는 순간 So the moment they're able to have exchange and communication, 새로운 마음이 흘러들어오고 new heart enters. 새로운 지혜가 흘러들어오고 New wisdom enters. 내게는 이제 밝은 마음이 없었지만 Yes, I didn't have a bright heart, 이제 정말 하나님 속에 밝은 마음이 우리 속에 흘러들어오고 but the bright heart of God enters into me. 내게 지혜가 없지만 Yes, I don't have wisdom, 소통하고 교류하면서 이제 새로운 지혜들이 흘러들어오고 but through communication and exchange, new wisdom enters. 하나님의 마음이 우리 속에 흐르면서 And as the word of God flows into our hearts, 우리가 지혜를 얻고 행복을 얻고 소망을 얻고 믿음을 얻고 we gain faith and hope and happiness and wisdom. 안녕하십니까? नमस्ते सभी को। 오늘 두 번째 시간입니다. आज हमारा दूसरा सत्र 예, है। 리더로 성장하는 소통과 교류의 지혜에 관해서 말씀을 आइए आज हम 드리겠습니다. बात करेंगे संचार और अदल बदल बुद्धि नेतृत्व बांधने के लिए। 먼저 성경 잠언에 있는 말씀을 한 구절 읽고 시작하겠습니다. 예, 잠언 27장 17절에 있는 말씀입니다. 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그 친구의 얼굴을 जैसे 빛나게 लोहा 하느니라. लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। 제가 이스라엘에 몇 년 전에 이렇게 다녀왔습니다. ज्यादा लंबे समय में पहले नहीं था, लेकिन मैं इजराइल में गया 거기에 था 가보니까 갈릴리 호수가 굉장히 컸습니다. और गलील का समंदर बहुत बड़ा 네, था। 마치 바다처럼 넓다고 해서 사람들이 갈릴리 바다라고 이렇게 부르기도 합니다. कभी कभार वो गलील का समंदर उसको कहते हैं क्योंकि सागर के समान है। 그러나 사실 이제 바다는 아니고 이제 호수인데요. असलियत में वो एक समंदर नहीं, लेकिन एक झील है। 갈릴리 호수에는 굉장히 많은 물고기들이 이렇게 살고 있었어요. और उस झील में बहुत सारी मछलियां हैं। 또 주변에는 그 물이 풍부하니까 이제 여러 이제 푸르른 그런 나무들이 많이 보였습니다. और क्योंकि बहुत सारा पानी है, इसलिए जो उस झील के 근데 이제 남쪽으로 좀 내려가면은 사해 바다가 लेकिन 있습니다. उसके दक्षिण की ओर मृतक समंदर है। 예, 그 이제 죽음의 바다 이렇게 부르죠. वे उसे मृतक समंदर करके पुकारते हैं। 물을 받아들이기는 하는데 이제 물이 나가는 곳이 없습니다. हालांकि वो समंदर पानी को तो स्वीकारते, लेकिन पानी को छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। 그래서 그 사해에는 그 관광객들이 오면 그 부영 체험이라 해서 물에서 이제 뜨는 이런 체험을 합니다. इसलिए जब लोग जो है उस मृतक समंदर में जाते हैं, उनको मौका मिलता है उसके अंदर तैरने के लिए। 저도 그때 이제 이스라엘 가서 저 사해 부영 체험을 한번 저도 해봤습니다. मैंने भी उस मृतक समंदर में मैंने तैरा। 예, 물론 저 사진은 제가 아닙니다. जरूर वो चित्र में मैं वो नहीं हूँ। 참 신기한 건 물에 들어가면 수영을 못하는 사람도 물에 자연스럽게 뜨게 되어 있습니다. हालांकि आपको पता नहीं कि कैसे तैरे, लेकिन अगर आप मृतक समंदर में उतरते हो तो अपने आप से 보통 तैरोगे। 바닷물의 그 염분의 농도보다 저 사해는 10배 이상 그 농도가 짙게 되어 있답니다. और मृतक समंदर में जो नमक की एकाग्रता वो दूसरे कोई भी सागर से 10 गुना 그래서 ज्यादा है। 저 사해에는 물고기가 전혀 살 수가 없습니다. इसलिए उस मृतक समंदर में कोई मछली नहीं है। 우리가 갈릴리 호수와 또 사해 이 부분들을 이렇게 जब 생각을 हम सोचते हो 해보면 गलील के समंदर और मृतक समंदर का फर्क, 물이 이렇게 흘러간다는 것은 그 굉장히 그 중요한 것이죠. और पानी का बहना ये बहुत ही 또 महत्वपूर्ण 물이 बात 흐르지 है। 않으면 결국 물은 썩고 물에는 생물체가 살기가 어렵습니다. और अगर पानी नहीं बहता तो वो पानी सिर्फ सड़ सकता है, उस पर कोई जीवन नहीं बच 우리의 सकता। 몸도 건강한 몸은 이제 피가 잘 흐르고요. और एक सेहतमंद शरीर में खून अच्छी तरह से बहता है। 신경도 이제 흘러야 이제 몸이 건강합니다. और वही आपके नसों में जाता है और आपका शरीर सेहतमंद होगा। 그렇지만 여러분 마음의 세계도 이렇게 흘러야만 건강한 마음을 유지할 수 वैसे 있는데 ही मन की दुनिया में, हमारे मन की दुनिया में एक बहाव होना चाहिए, एक 오늘날 सेहतमंद 많은 젊은이들이 मन होने के 마음이 लिए। 이제 고립되는 경우가 참 많습니다. लेकिन इन दिनों में बहुत सारे युवाओं के पास एक एकांत मन है। 이 고립되어 있는 부분들을 흐르도록 이끌어 준다면 젊은이들은 정말 재능도 많고 하기 때문에 굉장히 좋은 일꾼이 될 수 있습니다. और अगर आप
इन युवाओं के मनों को बहने को लगा था, हालांकि उनके पास बहुत सारी कला है, वो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे। 사람과 사람 사이에 마음이 흐르고요. जब उनका मन लोगों के बीच में बहता है 더 나아가서는 이제 하나님과 우리 마음이 흐르게 된다면 और आगे भी अगर हमारा मन परमेश्वर के साथ बहता है तो 우리가 정말 굉장히 행복한 신앙생활 할 수 있고 좋은 젊은 일꾼들이 탄생하게 되는 것입니다. फिर हम बहुत ही महान आत्मिक जीवन जी सकते हैं और बड़े कार्यकर्ता को उभर सकते हैं। 사람의 마음에 여러분 고립이 오는 원인들이 있습니다. और ऐसे कारण है, ऐसे वजह है क्योंकि लोगों के मनों में ऐसा एकांत होता है। 고립이 오는 원인을 여러분 뭐라고 생각하십니까? आपको क्या लगता है क्यों एकांत के वजह क्या हो 고립이 सकते 오는 원인들이 여러 가지 있지만 हैं? जरूर उसमें बहुत सारे वजह है एकांत होने का। 첫 번째는 이제 부담스러운 걸 피할 पहले 때 तो है 고립이 बोझ 옵니다. का सामना नहीं करना। 두 번째는 그 자기를 과신할 때 이제 고립이 오죠. और दूसरा है अति 세 आत्मविश्वास। 번째는 이제 대화와 소통이 부족할 때 고립이 옵니다. और तीसरा है संचार की कमी। 그래서 이제 저희 이 청소년 연합에서는 그 굿뉴스코 해외 봉사단 프로그램을 만들어서 이렇게 운영을 하고 있습니다. और हमारे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी स्वयं सेवक का कार्यक्रम होता है। 젊은이들이 정말 이렇게 부담스러움을 한번 넘어볼 수 있는 기회들을 이렇게 마련하고자 해서 굿뉴스코 해외 봉사단을 만들었습니다. हमने सोचा कि ये गुड न्यूज़ को ओवरसीज वॉलंटियर कार्यक्रम शुरू करे ताकि युवा जो है 낯선 वो 환경에 बोझ 가서 का 지내보고요. सामना करे और वे एक नए अपरिचित 또 वातावरण में 낯선 जाते हैं। 사람들, 또 다른 문화, 다른 언어 이런 모든 것들은 굉장히 우리 젊은이들에게는 부담스러움을 줍니다. और सांस्कृतिक और अलग भाषा, ये सारी चीज़ें युवाओं के लिए बहुत बोझ लाता है। 그러나 이제 이런 부담스러운 부분들을 젊은이들이 부딪혀 나갈 때 마음이 굉장히 강해지죠. लेकिन जब ऐसे बोझ का सामना करते हैं, जब उनका मन मजबूत होता है 마음이 약한 이제 젊은이들은 조금 부담되면 이제 피해 버립니다. और जो युवा उनके पास जो कमज़ोर मन है वो बोझ से भागते हैं। 예를 들어서 이제 사람들 만나고 친구들 대하기가 부담스러우니까 그냥 그 컴퓨터 앞에 앉아 있는 게임 속에 있는 그런 친구들도 있습니다. और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है, लोगों को सामना करने के लिए बहुत ही बोझ लगता है, इसलिए अपने आप को छुपाते हैं 그럼 여러분 कंप्यूटर 굉장히 गेम्स के पीछे। 이 젊은이들의 마음이 고립이 와버리는 것이죠. और फिर एकांतपन ऐसे युवाओं के मनों में आता है। 또 이제 고립이 오는 원인들을 और 생각해 보면 जब हम देखते हैं दूसरे कारण हो सकते हैं एकांतपन 이제 के, 막 부담스러우니까 그냥 친구들하고 사람들하고 접하지 않고 뭐 애완동물하고 그냥 이렇게 같이 और 지내는 जो लोगों को दूसरे लोगों के सामने आने के लिए बहुत बोझ लगता है, इसलिए अपने पालतू 물론 के पास 여러분 뭐 물때 애완견을 좋아한다든지 애완동물을 사랑한다든지 뭐 그것이 여러분 나쁘다는 건 아닙니다. और जरूर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पालतू को प्यार करने के 예, लिए 또 बुरा है, 그것이 뭐 우리에게 고립을 가져온다 그런 뜻은 아닙니다. और मैं ये भी नहीं कहता कि पालतू आप अपने घर पे रखते हो तो 그러나 उससे 사람을 आप 대하는 것 एकांतपन 자체가 महसूस करोगे। 부담스러워서 이제 부담을 피해서 그렇게 뭐 동물들과 만약에 지낸다고 하면 그때는 마음에 분명 고립이 찾아올 것입니다. लेकिन ज़रूर अगर आपको बोझ लगता है लोगों को मिलने के लिए, सामना करने के लिए, और जानवर के पास आपका मन रुक आपका आप 예, ध्यान देते हो तो 사람들은 फिर आप 의견이 다르기 때문에 एकांतपन 서로 महसूस करोगे। 충돌도 하고 서로 갈등도 막 겪게 되죠. और ज़रूर लोगों की अलग अलग राय है, 그러나 이제 뭐 애완동물을 키우다 और ज़रूर लोगों 보면 के पास अलग अलग राय है और इसलिए वो 집에 이제 संघर्ष 강아지를 करते हैं। 기르다 보면 इसलिए जब आपके पास पालतू है, मतलब उदाहरण कि 강아지는 आपके पास आपके 항상 घर में कुत्ता 주인이 है, 오면 꼬리를 흔들죠. और जब मालिक घर आता है तो हर समय वो कुत्ता अपने पूंछ को हिलाते हैं 주인을 반겨해 줍니다. और बहुत खुशी से वो मालिक को मिलता 그러면서 है, 전혀 주인에게 부담스러운 이야기를 할 수 없죠. और मालिक को कभी बोझ वाली बात वो कह नहीं सकता। 아, 주인님 오늘 왜 이렇게 늦잠 잤어요? हाँ ओ मालिक आप इतने देर रात क्यों 주인님 आप 왜 오늘 सोए? 이렇게 그 공부 안 하고 늦게까지 이렇게 놀기만 해요? हाँ मास्टर मालिक आप अभी तक 예, देर रात तक 전혀 आप पढ़ाई क्यों 이제 नहीं की? 그 강아지는 그런 얘기를 하지 않습니다. कुत्ते ऐसे नहीं कहते, 부담이 없죠. कुत्तों में कोई बोझ नहीं होता। 여러분 우리가 부담을 피해서 이렇게 흘러갈 때 마음에 고립이 오는 건 굉장히 무서운 것입니다. सभी लोगों बहुत बड़ी समस्या है एकांतपन होने के 반대로 लिए। 우리 젊은 청소년들이 부담스러운 일들을 자꾸 부딪혀 보면은 दूसरे बाजू में अगर हमारे जो युवा लगातार बोझ 예, का सामना करेंगे 굉장히 그 마음의 세계가 강해지면서 굉장히 좋아집니다. तो उनके मन की दुनिया बहुत मजबूत होगा और बहुत बेहतर होगा। 10여 년 전에 우리 한국에서 저희들 이제 청소년 행사가 있었을 때 कोरिया में बहुत साल पहले एक यूथ का कार्यक्रम रखा था। 그때 이제 그 한 강사분을 초대했었는데요. हमने एक बहुत ही विशेष अतिथि वक्ता को बुलाया था। 그분은 그 우루과이 사람이었습니다. वो उरुग्वाय देश 네, के थे। 과거에 1972년도에 이제 우루과이 럭비 팀이 칠레로 가다가
안데스 산맥에서 비행기가 추락하는 사건이 있었죠. और एक ऐसा हादसा हुआ था कि अंदेस पहाड़ पे उरुग्वाय के रग्बी टीम का 예, प्लेन क्रैश 그분은 हुआ था 그때 이제 16명이 생존을 했는데 그 생존자 중에 한 분이었습니다. और सिर्फ 16 लोग बच गए तो उसमें से एक था 예, 안토니오 और 씨였는데 उनका नाम एंटोनिया था 예, 그분이 이제 저희 행사에 오셔서 이제 강연을 했습니다. और वो हमारे इस कार्यक्रम में आए तो उन्होंने एक 예, लेक्चर दिया था 얼라이브라는 저 영화에 이제 저 영화를 저분들의 그 실화 사건을 영화로 만들었었죠. और फिर उन्होंने उनकी कहानी लिया और उनके ऊपर पिक्चर बना जो एलाइव 한 पिक्चर 시간 이제 안토니오 씨가 강연을 하시고 और एंटोनिया ने जैसे 1 घंटे के लिए लेक्चर दिए 예, 그리고 나서 이제 한 분이 질문을 했습니다. एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा 안토니오 씨 그 안데 산맥에서 72일간 이렇게 그 사투하시면서 결국 구조가 되셨는데 आप छुड़ाए जाने के पहले आंदेस पर्वत पे 72 दिन आप थे वहां पर 사회로 이제 다시 돌아와서 그 다음에 또 어려움을 만났을 때 어떻게 그 어려움을 극복하셨나요? लेकिन जब आप समाज में वापस गए और कठिनाई का सामना किया उस कठिनाई का कैसे आपने सामना किया 그때 안토니오 씨가 이렇게 대답했습니다. उस वक्त एंटोनिया ने ऐसा जवाब दिया 저는 안데스 산맥에서 만난 어려움보다 더 큰 어려움을 만나본 적이 없습니다. आंदेस पर्वत में जो कठिनाई का सामना किया तो उससे बड़ा कठिनाई का सामना 그는 너무 극한 어려움을 이제 이기다 보니까 फिर से कभी ने मैंने सामना किया था 더 이상 사회에 나와서 만나는 그런 어려움들은 굉장히 작게 여겨졌다는 और जो 거죠. समस्या उन्होंने समाज में सामना किया तो बहुत छोटे समस्या थी 그 16명의 사람들이 대부분 다 우루과이 사회에서 굉장히 훌륭한 일들을 이렇게 사회적으로 해 나갔습니다. और ज्यादा करके जो 16 लोग जो है समाज में बहुत अच्छे बड़े काम करते रह गए 예, 부담을 피하지 않고 부담을 부딪혀 했기 때문에 그들은 그곳에서 굉장히 강한 마인드가 만들어졌죠. और क्योंकि उन्होंने बोझ का सामना किया उस बोझ से भागे नहीं इसलिए उनका मन बहुत मजबूत हुआ 예, 그런 굉장히 어려운 어려움들을 이기고 나서 보니까 많은 부분이 그 행복의 어떤 조건들이었다고 합니다. और वे जो है खुशियों के कारक है 내 주변이 행복투성이었습니다라고 표현했습니다. उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द बहुत खुश 그리고 थे 청소년들이 부담을 피하지 않고 부딪혀 나갈 때 जब युवा बोझ का सामना नहीं जब बचना चाहते हैं 그리고 굉장히 और जब 강한 उसका 마음을 सामना 얻게 करते हैं 되면서 और वे एक बहुत ही मजबूत मन को 이 पाते हैं 사회에 이제 리더로서 성장할 수 있는 것입니다. और आज के समाज के बड़े लीडर्स बन सकते हैं 성경을 우리가 살펴볼 때 जब हम बाइबल में देखते हैं 젊은 다윗이 목동 시절이었습니다. उस वक्त जब दाऊद जो एक चरवाहा था 그는 이제 목동 시절에 곰이나 사자가 나타나면 도망가지 않고 그 곰과 사자와 싸웠죠. और आपको पता है जब वो चरवाहा था जो आने वाला शेर और भालू से वो डरा नहीं और उनका उसने डटकर सामना 우리가 किया 한편으로 생각해 보면 그 양 한 마리 내주면 되지. 그 양 때문에 생명을 이렇게 목숨을 걸고 싸워야 되나 이런 आपको 생각을 할 पता है 수 आसानी 있습니다. से हम सोच सकते हैं कि क्यों एक भेड़ उसको उस जानवर को नहीं दिया अपने खुद के 예, 한 번은 जान 제가 को 아프리카 बाजी लगाने से 선교사님을 कई अच्छी 통해서 बात 그 है तो 마사이족에 관한 이야기를 들은 적이 있습니다. और एक बार मैंने जो मिशनरी अफ्रीका में उनसे मैंने मसाए लोगों के 예, बारे में सुना 그들은 था 이제 그 마을에 사자가 내려와서 양이나 뭐 소를 이렇게 잡아먹게 되면 आपको पता है जब एक शेर उनके गांव में आते हैं उनके भेड़ या बकरी को जब चुरा के 그 लेकर जाता है 마사이족 사람들은 반드시 그 사자를 쫓아가고 찾아내서 그 사자를 죽인다고 और 합니다. मसाए के जो लोग उस शेर को ढूंढते हैं और उसको मार देते हैं 왜 그러냐면 그 사자들의 그 습성이 क्योंकि 있는데요. उन शेरों के बीच में एक कुछ स्वभाव है 마을에 와서 이제 양 한 마리를 잡아먹으면 अगर वो गांव में आके एक भेड़ को लेकर 돌아가면 जाते 이제 그것은 끝이 아니고 वो वहीं पे खत्म नहीं होता 다음에는 이제 그 사자 가족을 데리고 온답니다. और अगले दिन वो पूरे झुंड को लेकर आते हैं 야, 우리 오늘 맛있는 거 먹으러 ए, 가자. चलो हम जाके बहुत ज्यादा स्वादिष्ट कुछ 그래서 खाएंगे 그 이제 양들이 있는 곳에 온다는 거죠. और वो वहां पे उस जगह में आएगा जहाँ पे बहुत भेड़ 그 है 염소 या 있는 जहाँ 곳에 पे 온다는 बहुत 거죠. बकरियां है 그래서 이제 한 마리, 두 마리, 세 마리 결국 다 잡아먹게 된다는 거. आखिर में एक दो ऐसा सबको लेकर जाएंगे वे। 그걸 이제 잘 알고 있는 마사이 사람들은 और मसाई के लोग जो इनको अच्छी तरह से ये बात पता 양 है 한 마리를 잃어버렸을 때 그 जब उन्होंने एक भेड़ को खोया 사자를 반드시 죽이지 않으면 우리 양 전체가 다 죽어. और अगर उन शेर को नहीं मारा तो सारे के सारे भेड़ गवाएंगे 예, 그 사실을 알기 때문에 ये बात को उनको पता है 짐승 한 마리가 아니고 वो एक जानवर नहीं है लेकिन 짐승 전체를 다 내줘야 되니까 उनको उनको पूरा भेड़ बकरियों को 끝까지 दे देना है 목숨을 걸고 싸우는 것입니다. इसलिए अपने जान को बाजी लगा कर 다윗이 लड़ाई करते हैं। 양이나 그 가축들을 지킬 때 जब
दाऊद जो है अपने भेड़ों को संभाल रहा 그러니까 था, रक्षा कर 사자나 रहा था, 곰이 나타나도 도망갈 수 없었던 것은 और वो भालू और शेर से भाग नहीं सकता था। 뭐 충분히 싸울만 하거나 원래 용감해서가 아니고 वो ऐसा नहीं कि शुरुआत से बहुत ही ताकतवर 부담이 था। 있었지만 हाँ, उसके पास बोझ था। 예, 처음 사자를 만나면 겁이 나지 않겠습니까? आपको नहीं लगता कि बहुत ही डरा हुआ रहेगा पहली बार 그걸 이제 Fighting a 피할 lion? 수는 없고 कर रहा है वो, 예, 이제 지켜야 되는데 양을. और उसको उसके भेड़ों को संभालना है। 그래서 이제 하나님을 바라보면서 싸운 거죠. इसलिए जैसे वो लड़ाई किया उसने परमेश्वर की ओर 그렇게 이제 देखा। 부담을 피할 수 없고 싸우고 부딪혔을 때 जब बोझ से भागने से रुक गया और जब उसने लड़ाई 다윗이 이제 किया, 뭘 보게 됐냐면 दाऊद ने क्या देखा? 아, 하나님이 나를 지키시는구나. हाँ, परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, 하나님 나와 함께 परमेश्वर 하시는구나. मेरे संग है, 하나님 나를 परमेश्वर 사랑하시는구나. मुझसे प्यार करता है। 그걸 다윗은 이제 경험하게 되는 겁니다. और ऐसी चीज दाऊद 이런 को 어려움을 समझ में 많이 आया। 겪을 때, जब आप कठिनाई के सामना 특히 करते हैं, 젊은이들이 어려움을 겪을 때, विशेष करके युवा जब कठिनाई का सामना करते हैं, 그 어려움 속에서 이제 나올 수 있는 방법이 없기 때문에 그들은 하나님을 의지하게 되고 주님을 바라보게 됩니다. जब उनके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं तो फिर परमेश्वर की ओर देखते और देखकर रोते हैं, 그러면서 굉장히 마음이 강해지고 밝아지죠. और फिर उनका मन जो है मजबूत और 하나님과 उजालित होता है और 가까워지죠. परमेश्वर के करीब होता है। 그래서 다윗은 간증하기를 और फिर दाऊद ने अपनी साक्ष्य 고난 से 당한 गवाही 것이 दी, 나에게 유익이라. ये कठिनाई है मेरे लिए एक फायदेमंद 내가 है, 고난 중에 주님의 율례를 배우게 되었다. क्योंकि इस दर्द के समय में उसने परमेश्वर को सीखा। 여러분 고립이 오는 첫 번째 원인 부담을 피할 때 고립이 옵니다. और पहला कारण है एकांतपन का, जब आप बोझ का 두 번째 सामना 이제 नहीं करना 고립이 चाहते। 오는 원인을 अगर 살펴보면 हम दूसरे कारण को देखेंगे तो 자기를 이제 과신할 때 고립이 오게 वो 됩니다. अति आत्मविश्वास की वजह से 아, 내가 최고야. कि मैं बहुत ही 내가 उत्तम हूँ, 잘났어. मैं बहुत ही महान 난 हूँ, 똑똑해. मैं होशियार हूँ, 난 저 친구보다 나아. मैं उस व्यक्ति से 이런 बेहतर हूँ। 마음을 쉽게 우리는 갖습니다. हमें आसानी से ऐसा मन 그런 आता 마음을 है। 갖게 되면은 이제 더 이상 다른 사람의 이야기를 받아들일 수 없고 और फिर हम दूसरे लोगों के शब्द को स्वीकार 더 नहीं सकते, 나아가서는 더 이상 하나님의 말씀을 받아들이기 어렵습니다. और इससे कई ज्यादा परमेश्वर के मन को स्वीकारने के लिए बहुत ही कठिन 성경은 होता है। 말씀하기를 교만은 패망의 선봉이다. और जैसे वचनों में लिखा है कि घमंड जो है बर्बादी के 예, पहले 하나님이 घमंड जाता 참 है। 두려워하는 게 하나 있는데 एक चीज है परमेश्वर जो डरता है। 하나님 전능하신데 뭘 두려워하실까? हाँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर 하나님은 डरता है। 우리가 마음이 교만하여질까봐 두려워하다. God परमेश्वर इस बात से डरता है कि हमारा मन में घमंड न आए, 교만하여 여호와를 잊어버릴까 두려워했다고 और 하시죠. उससे ये डरता है कि हमारे घमंड की वजह से हम उसको भूल जाए। 그럼 누가복음 15장 말씀을 이렇게 읽어보면 अगर हम लूका के 15 अध्याय में देखेंगे 그 तो 15장에는 이제 그 둘째 아들이 마음이 어떻게 흘러가는지가 자세히 나와 있어요. और उस उड़ाव पुत्र के मन के बहाव के बारे में लिखा गया है। 둘째 아들이 왜 망했고 왜 불행했고 그가 그러다 어떻게 아버지의 집에 와서 복을 받았는지 마음의 6단계를 ये बात 자세하게 करता है 설명하고 कि उड़ाव पुत्र के 6 चरणों के बारे में कि कैसे उड़ाव पुत्र अपने पिता को छोड़कर जाकर बर्बाद होकर नाकामयाब 둘째 होकर वापस अपने 아들은 पिता के 이제 पास 어느 लौट 날 जाता है। 마음이 굉장히 교만해졌습니다. उड़ाव पुत्र एक दिन उसका मन बहुत घमंडी हो गया। 그가 뭔가 이렇게 잘하는 것이 있었는 것 मेरे ख्याल 같습니다. से कोई से बात है जिसमें वो 칭찬을 अच्छा था। 받았든지 शायद उसकी स्तुति किया 아니면 뭐 जाएगा, 이렇게 소를 잘 몰았든지 शायद मेरे ख्याल से गाय बैल को उसने संभाला 아니면 होगा, 아버지를 잘 도왔든지 या उसने अपने पिता का अच्छा काम किया होगा। 어떤 이유에서인지는 जो 모르겠지만 कुछ भी कारण क्यों ना हो, 둘째 아들은 이제 마음이 이제 교만해지면서 자기를 믿게 됐습니다. दूसरे बेटे के पास ऐसा मन था कि खुद के ऊपर भरोसा 자신감이 करना, उसके पास 생겼습니다. अपना आत्मविश्वास था। 그럼 어디든지 이제 가서 아버지를 떠나서 잘 살 수 있을 거라는 그런 마음이 들었습니다. and he और उसके पास ऐसा मन था जहाँ कहीं भी क्यों न जाओ अपने पिता के बगैर मैं 둘째 अच्छी तरह 아들의 से जी 마음에 सकता हूँ। 6단계가 있는데 और ये दूसरे 6 चरण 그 है 마음의 मन 흐름 के। 첫 번째 단계가 바로 이제 पहला है 교만입니다. वो खुद के ऊपर भरोसा करने वाला 자기를 self. 믿는 ये बहुत 마음이죠. वो घमंड है। 예, 자기를 믿고 나면 जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हो 그 다음에 찾아오는 증세가 있습니다. और उसके पीछे कुछ आगे 예, जाता है, 그거는 그 다음은 태만과 방종이 이제 찾아옵니다. और वो लापरवाह है और स्वयं भोग है। 그리고 이제 세 번째 찾아오는 단계는 और तीसरा है 실패를 하게 되죠. वो असफलता 그리고 है। 네 번째는 고통을 और 당하게 되죠. चौथा दर्द है। 그리고 나서 이제 다섯 번째는 그 실패와 고통과 괴로움 속에서 이제 마음을 뉘우치게 되죠. और उस दर्द और असफलता से आप तुम्हारे मन को वापस 그러다가 मुड़ाना 이제 है। 여섯 번째는 이제 아버지께로 돌아가서 축복을 받습니다. और छठा चरण है पिता के पास वापस लौट के वो आशीष पाना। 예, 이 둘째 아들의 마음의 흐름의 6단계입니다.
और दूसरे बेटे का 6 चरण का उसका मन का है। 그러니까 교만해서 아버지를 떠나고 उसका घमंड उसको पिता से अलग करा दिया 먼 나라에 가서 성실하게 살아야 하는데 और एक दूर देश में एक ईमानदार जीवन जीना 이미 चाहिए था। 자기를 믿기 때문에 लेकिन क्योंकि अपने खुद के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, 자기 생각을 따라 흘러갑니다. वो अपने सोच के पीछे चला, 욕망을 따라 उसकी इच्छा के पीछे 술집에 가서 다 재산을 날리고 उसने सारे अपने माल मत्ता को बर्बाद उड़ा 이제 दिया 정말 거지가 됐습니다. And he और वो एक भिखारी बना 돌아갈 수가 और 없으니까 अभी दूसरा कोई मार्ग नहीं कि वापस 돼지우리에 लौटे 가서 고생을 합니다. और अभी एक सुअर के खान में वो तड़प 그러다 रहा है 결국 돼지우리에서 정말 줄여 죽게 되면서 और जैसे सुअर के खान में वो भूखे मर रहा है, 비로소 자기를 믿는 게 얼마나 어리석었던지를 깨닫게 he 됩니다. comes उसे पता चलता कि कितना मूर्ख था अपने खुद के ऊपर भरोसा करने 그리고 के, 그가 아버지 집으로 돌이켰을 때 इसलिए अपने पिता के पास वापस लौटा। 아버지 집으로 돌아갔을 때 जब अपने पिता के पास वापस लौटा, 아버지의 사랑과 은혜와 자비를 만나게 됩니다. उसने अपने पिता के प्रेम, अनुग्रह और दया से वो मिला। 여러분 마음이 이제 자기를 과신하는 것이 정말 우리의 굉장한 독과 같습니다. ऐसे ही कि जब आपके पास अति आत्मविश्वास है वो एक जहर के समान है। 우리 마음의 세계 안에 우리를 유익하게 하는 생각도 있지만 우리를 굉장히 불행으로 몰아가는 생각도 और 있어요. हमारे मन के दुनिया में ऐसा भी सोच है जो हमें फायदा देते हैं और ऐसे भी सोच है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। 보거라는 और 물고기가 एक मछली है 있는데, जिसका नाम है बोगा, 예, 그는 이제 그 보거는 이제 피와 그 알에 독이 있습니다. और इस मछली के खून के अंदर जहर है। 그 피와 알의 독을 제하지 않고 그 물고기를 먹으면은 요리해서 먹으면은 사람이 심하면 죽게 और 돼요. अगर उस जहर को उस मछली के खून से नहीं निकालते और वैसे आप इस्तेमाल करते हो तो आप मर सकते हो। 그렇기 때문에 이제 그 요리사들은 꼭 자격증을 소지해야 하고요. इसलिए आचार्य को बहुत ही संभाल के इसको तैयारी करना है। 그 독이 이제 테트로도톡신이라는 독인데요. और ये जो जहर वो एक टॉक्सिन है 그것이 온몸에 퍼지면서 결국 신경에 마비가 오면서 생명을 और आपके 잃기도 합니다. पूरे शरीर में फैलता है और आपको शोरालिसिस देते हैं और आखिर में आपके जीवन को आप 이제 खो 사람은 सकते 지혜가 हो। 있으니까 और क्योंकि लोगों के पास बुद्धि है, 예, 그런 이제 독이든 물고기들을 요리해서 먹을 때는 꼭 독을 제하고 이제 먹지요. और इसलिए जब इस मछली को जो वो खाना चाहते हैं तो इस जहर को निकाल के उसके बाद वो खाते 그리고 우리 हैं। 마음의 세계도 और 마찬가지입니다. हमारे मन की दुनिया भी वैसे ही है। 우리는 그냥 아무 생각이나 हम 받아들이지만 सिर्फ स्वीकारते, कोई भी सोच जो हम जो चाहिए उसको 예, स्वीकारते हैं। 나를 믿는 그 마음을 받아들이면 लेकिन 불행해집니다. आपके ऊपर खुद के ऊपर भरोसा करने का सोच के ऊपर आप स्वीकार तभी बर्बादी 나는 आती है 잘해, 똑똑해, I'm कि मैं 난 होशियार हूँ, 괜찮아, 난 뛰어나. मैं बहुत ही 머리가 कलाकार हूँ, 좋아. मैं सचमुच में होशियार हूँ। 그런 생각들을 받아들이면 그거는 그 독과 같습니다. और ऐसे सोच को स्वीकारना मतलब एक जहर के समान है। 이제 많은 사회적으로 볼 때 그 회사들이 어느 날 이렇게 넘어지는 경우들이 있죠. You know- आपको पता है सोसाइटी समाज में बहुत सारी कंपनीज देखते तो उनके बर्बादी को भी देख सकते हैं। 예전에 이제 아주 유명한 필름 회사들이 있었습니다. बहुत लंबे समय पहले बहुत मशहूर एक फिल्म 예, कंपनी 그 थी 세계 3대 필름 회사를 이제 이야기할 때 और सबसे तीन 예, 이제 그 후지 필름, फूजी फिल्म है, 고닥, कोडैक है 아그파. और एक्वा। 예, 세계 3대 필름 회사였죠. वे टॉप 3 में से 근데 이제 그 3대 필름 회사 중에 지금은 후지 필름 회사만 건재합니다. और तीनों में से सिर्फ फूजी फिल्म अभी इस समय है। 한 번은 이제 그 신문에서 그런 기사들을 읽어봤는데 And one- और एक बार मैंने समाचार पत्र में 예, मैंने 그 पढ़ा 아그파 था, 필름이나 또 코닥 필름 굉장히 유명했지만 그 회사들이 이제는 다 기울어졌고요. हालांकि कोडैक और एक्वा एक जमाने में बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं है। that 후지 big. 필름 회사만 이제 건재하게 살았습니다. सिर्फ फूजी फिल्म जो है वो जीवित है। 그 이유가 उसका 뭐냐면은 वजह ये है कि 그 후지 필름 회사에서는 이제 우리 회사가 이제 곧 무너진다. फूजी फिल्म को लगा कि हमारी कंपनी बहुत जल्दी बर्बाद होगी 예, 회사가 이제 살기 위해서 아주 중요한 조건이랍니다. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा भूत कारक है कंपनी को 이 बचाने 회사가 के लिए। 곧 이제 넘어질 것을 알고 그걸 받아들이고 대책을 세우지 않으면 회사는 넘어지는 अगर 거죠. वे उस सत्य को नहीं स्वीकारेंगे कि वो नाकामयाब होने वाले हैं और उस पर मात करने की कोशिश करते हो तो जरूर वो बर्बाद 많은 होगी। 사람들이 필름을 사용하다가 이제 디지털 카메라가 나오면서 그 디지털 카메라를 선호하게 됐습니다. बहुत सारे लोग पहले फिल्म इस्तेमाल करते थे अभी डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करते 예, 소비자들은 이제 디지털 카메라를 좋아했죠. और भी उपभोक्ताओं को डिजिटल कैमरा उनको 이제 पसंद 필름 है। 회사들은 결국에 이제 문을 닫아야 되는 거예요. इसलिए फिल्म कंपनी को अभी अपने दरवाजा बंद करना है। 그것에 대한 대책을 강구해야 되는 거예요. अभी उनको सोचना है कि कैसे इसका सामना हम करें। 근데 후지 필름 회사에서는 이제 우리 회사가 곧 무너질 거라는 걸 알고 लेकिन फूजी फिल्म ये जानता था कि उनका कंपनी बहुत जल्दी गिर 그 जाएगा। 이제 대표께서 이제 어떤 일을 했느냐면 इसलिए उसका जो
मालिक ने क्या किया 예, 몇천 명을 이제 구조조정을 하고요. और अपने सारे कर्मचारियों को वापस बुला के 그리고 이제 그 필름 회사에서 그 안에서 그 연구원들을 이용해서 새로운 어떤 그 회사를 만들었어요. और कंपनी के अंदर ही अपने शोधकर्ताओं को इस्तेमाल करते एक नया प्रोडक्ट बनाया। 그 필름의 재료로 이제 콜라겐이 आपको पता है 쓰여졌는데 कि फिल्म में कोलेजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण 그 एक भाग 콜라겐을 है 이용해서 이제 화장품을 만들기 시작했어요. और उस कोलेजन से उन्होंने अंग 오랜 세월 बनाए 동안 그 필름 회사에서 일을 해왔던 그 연구원들이 굉장히 많았는데 और बहुत लंबे समय के लिए बहुत शोधकर्ताओं कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे। 예, 그 연구소에 있는 연구원들이 그동안 개발했던 그 많은 노하우들을 이용해서 और बहुत साल रिसर्च करने शोध करने के बाद 예, 그 화장품을 개발했습니다. उन्होंने एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया निर्माण किया 아스타리프트라는 화장품 회사를 만듭니다. और एथलीट करके एक कॉस्मेटिक ब्रांड 그리고 तैयार की 이제 건강식품도 많이 만들어내고요. और बहुत सारे स्वस्थ 그러면서 이제 उत्पाद उन्होंने बनाए 필름으로 그 벌어들이는 수입은 뭐 10%도 안 되는데 हालांकि फिल्म से उनकी कमाई सिर्फ 10% थी 그 화장품으로 또 보조식품으로 그리고 이제 또 후지 제록스라고 해서 이제 제록스사를 인수를 하죠. और फूजी जेरोक्स से कॉस्मेटिक कंपनी और स्वस्थ उत्पादक के प्रोडक्ट से और 예, 그러면서 이 후지 필름 회사는 지금도 건재하게 살아 있습니다. और उन सारे चीजों की वजह से फूजी फिल्म अभी भी जीवित है 많은 आज 사람들에게 어떤 교훈을 주는 이야기죠. और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी 아, सीख 우리 है। 회사는 괜찮아. हाँ हमारी कंपनी ठीक है 그러나 시대의 흐름에 맞추지 못하면 결국 무너지는 겁니다. लेकिन अगर आप उस समय से नहीं चलते जो समय इस दुनिया में चल रहे तो आप सिर्फ नाकामयाब होगे। 네. 그런 회사 중에 이제 그 노키아라고 하는 휴대폰 회사가 있어요. और एक सेलफोन कंपनी है जिसका नाम नोकिया है 예, 핀란드에서 이제 그 만들었죠, 노키아. वो एक 네, फिनलैंड की कंपनी है 예, 그 노키아가 굉장히 그 사람들 인기가 좋았답니다. और उपभोक्ताओं के साथ नोकिया बहुत मशहूर था। 한때는 이제 전 세계 휴대폰 시장의 40%를 이렇게 점유할 정도였습니다. और एक ऐसा समय था कि सेलफोन इंडस्ट्री में 40% वो लिया करता था। 그런데 이제 그 2007년도에 그 아이폰이 출시가 됐답니다. लेकिन 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ 그랬을 때 이제 노키아 회사에서는 아이폰을 바라보는 시각이 아주 좀 이렇게 아니라고 태만했답니다. इसलिए नोकिया कंपनी जब आईफोन कंपनी को देखते तो बहुत ही लापरवाह था उसके 예, प्रति। 아이폰이 나왔을 때 아 이거 우리가 볼 때는 거의 장난감 수준이야. वो कह रहे थे कि हाँ ये आईफोन तो खाली खिलौना है हमारे लिए। 사실은 정말 많은 부분에 새로운 어떤 그런 이제 휴대폰이 개발이 된 거죠. और असलियत में सेलफोन में आईफोन के जरिए बहुत सारे नए सुधार किए गए थे, नए आविष्कार किया गया था। 그때 이미 이제 그걸 이제 느껴도 사실은 늦을 텐데 और अगर वो महसूस ही करते उस समय भी वो बहुत ही देर नहीं हो सकती थी। 노키아에서는 아 우리는 건재해 끄떡 없어. लेकिन नोकिया ने कहा कि हम भी अभी भी मजबूत हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 결국 아이폰을 따라잡을 수 없었습니다. और असलियत में वो आईफोन का वो सामना नहीं 네, कर 그러다 सके थे। 2013년에 이제 노키아 이 회사가 마이크로소프트사에 인수가 됐죠. और फिर 2013 में नोकिया जो माइक्रोसॉफ्ट में चला गया। 예, 지금도 이제 노키아 휴대폰을 만들기는 하지만 जी हाँ, आज भी वो सेलफोन बनाते हैं, 아이폰이나 लेकिन आईफोन के 또 समान 우리 한국의 삼성 휴대폰, 갤럭시폰이나 이런 것을 따라올 수는 없습니다. और सैमसंग गैलेक्सी के तुलने में वो उसके तोड़ नहीं दे सकते। 그러나 과거에 그 노키아 휴대폰은 정말 굉장히 사람들이 인기가 좋았고 뛰어난 제품이었어요. लेकिन पहले नोकिया जो सेलफोन बहुत ही अच्छा एक महान फोन था। 그러나 우리는 참 이제 최고야라고 하고 있는 동안 जब वे कहते जा रहे थे हम लोग महान है, हम 예, लोग उत्तम 시대는 है, 변했고 समय बदलते 소비자들의 गया 심리도 변했고 और उपभोक्ताओं की इच्छाएं भी बदलते गई IT 기술도 계속 바뀌어 왔습니다. और आईटी जो है एनवायरनमेंट वो बदल 그것을 गया। 따라오지 않았을 때 और जब वे ऐसे बदलाव का 그 सामना 회사가 नहीं के पीछे नहीं किया, 결국에는 이게 무너지게 되는 것이죠. आखिर में वो कंपनी 그래서 아기를 이제 우리가 그 자기를 과신한다는 건 굉장히 무서운 것이죠. इसलिए अति आत्मविश्वास ये बहुत ही डरावना चीज 사람들이 है। 이제 커버 스토리의 저주다 뭐 이런 표현을 쓸 때가 있어요. कभी कभार ये लोग ऐसे बात करते हैं कि कवर स्टोरी के शाप के 예, बारे में। 이제 이렇게 어떤 회사의 대표들께서 이렇게 그 어떤 책에 이제 표지 모델로 등장을 합니다. और बहुत बार जो कंपनी के सीईओ है, जो बड़े बड़े मैगजीन के जो कवर पेज बनते हैं, 근데 사람들이 왜 커버 스토리 저주라고 표현을 लेकिन 했냐면 वे क्यों कवर स्टोरी के शाप ऐसे क्यों ऐसे 이렇게 बुलाते 이제 हैं? 유명해지고 얼굴이 알려지고 많은 사람들에게 이제 존경을 받게 되면서 और जैसे बहुत ही मशहूर होते हैं और सारे लोग उसके बारे में जानते हैं 이제 유명세를 타게 되면 और वो बहुत ही मशहूर होते हैं, 아 정말 우리 회사가 대단해.
हाँ मेरा कंपनी सचमुच में बहुत महान है, 내가 정말 이 잘하고 있어. मैं बहुत अच्छा काम कर रहा 근데 हूँ, 그렇게 되었을 때 तो ये चीज महसूस ही होता 네, है 그 마음 안에 이제 다른 여러 가지 회사의 부족함에 대한 이야기는 잘 안 들려진다. और उनके कंपनी के कमी घटियों के बारे में वो सुनते नहीं है। 물론 뭐 커버 스토리에 등장한다 해서 모든 사람이 그런 건 아닙니다. जरूर ये जो कवर पुष्ट पे सारे लोगों का ये 그러나 कहानी नहीं 때로는 है, 참 그런 내가 알려지고 높아지고 좋아지고 세워지는 것 때문에 나를 이제 신뢰할 때 다른 이야기들을 받지 못해서 불행해지는 사례들이 लेकिन 많다는 거죠. बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ही मशहूर होते हैं, बहुत लोग को जानते हैं, आप खुद के ऊपर भरोसा करते हैं और दूसरों जो क्या कहते हैं उनके बातें आप सुनते नहीं हैं और 프랑스어로 आप निराश 이제 होते हैं और दयनीय 개구리라는 होते 말이 हो। 구르누인데요. और फ्रेंच भाषा में मेंढक के लिए एक शब्द है 이 개구리 요리를 이제 즐겨 먹는 사람들이 있습니다. और ऐसे लोग हैं जो मेंढक का पकवान खाना बहुत ही पसंद करते हैं। 저는 개구리 요리를 거의 먹어본 적이 없습니다. मैंने खुद कभी उसको खाया नहीं 즐겨하는 사람 और मैं 아닙니다. उसको खाना भी नहीं चाहता, 예, 여러분 근데 이제 개구리 요리를 좋아하는 사람들이 लेकिन ऐसे 있어요. लोग जो है बहुत ही मौज मस्ती करते हैं 그 मेंढक 프랑스에 का बना 가면 हुआ 이제 खाना 구르누이 그 पकवान को खा के। 요리하는 그 이야기 그 요리를 아주 잘하는 식당들이 있는데 그 이야기를 한번 들어봤어요. और मैंने सुना कोई रेस्टोरेंट ने कहा कि ये बहुत ही मशहूर मेंढक 이제 का 이 살아있는 पकवान बनाते हैं 개구리를 식탁에 이제 냄비 속에다가 이제 넣을 때 और जब आप एक जीवित मेंढक को लेकर स्टोव पे 그 रखते 냄비 हो 안에 물이 너무 뜨거우면 और उस बर्तन में पानी बहुत गर्म है 개구리가 이제 막 바로 और 튀쳐나오고 मेंढक तुरंत उधर से 또 이제 उछलता है 손님들 옷에 다 물이 튀져. और फिर वो पानी जो है सारे कस्टमर्स के कपड़ों के ऊपर 그 वो 살아있는 उड़ता है। 개구리를 잘 요리해서 이제 먹을 수 있는 그 아주 좋은 방법을 연구를 इसलिए 했어요. उन लोग ने एक शोध किया कि कैसे सचमुच में ये मेंढक के 예, 그 पकवान को कैसे 냄비에 बनाए। 물을 담아서 पहले वो बर्तन में पानी को रखते 개구리를 हैं 넣기 전에 그 물 온도를 개구리가 좋아하는 온도로 맞춘답니다. और फिर पानी का जो तापमान और मेंढक का तापमान को एक ही रखते हैं 예, 개구리가 좋아하는 온도가 약 15도쯤 된답니다. और 15 डिग्री सेल्सियस 거기다 है 개구리 넣어놓고 और मेंढक उसके अंदर 물을 है 이제 빨리빨리 끓이는 게 아니고 और वो तुरंत उस पानी को 온도를 빨리 बढ़ते नहीं, 높이는 게 아니고 वो तुरंत वो उस तापमान को 서서히 बढ़ाते नहीं, 높인답니다. धीरे धीरे 뭐 करके 1초에 뭐 0.000 몇 도씩 해서 이렇게 올리면은 그걸 전혀 느끼지 못하죠. शायद ही 0.00 डिग्री जो है एक 개구리 सेकंड में वो 굉장히 पानी को 편안하게 그 तब 물 속에 बढ़ाते 들어 हैं 있어요. और वो अचानक से वो टेम्परेचर तापमान को बढ़ाते नहीं है 자기도 धीरे 느끼지 करके। 못하지만 물 온도가 서서히 올라가다가 और उसको महसूस ही होता नहीं लेकिन वो तापमान धीरे धीरे बढ़ता है 35도가 넘어가면 लेकिन जब 35 डिग्री के ऊपर जब जाता है 그 피부가 이제 그 삶아지기 시작하는 거죠. It's उसका जो चमड़ा जो है वो 익어가기 시작하는 उबलने 거죠. लगता है, वो पकने 그때 이제 लगता है 느끼면서 이거 왜 이러지 하고 하면 और उस वक्त तो मेंढक सोचता है ये क्या हो रहा है, 그때 이미 늦는 것입니다. लेकिन तब तक बहुत देर हो बाहर चुकी ना올 है, 수가 없어요. अभी उसको बाहर आने को कोई 40도가 रास्ता नहीं है। 넘으면 जब वो 40 के ऊपर जब डिग्री 개구리가 जाता है 죽는답니다. मेंढक मर जाता है 그때부터 사람들이 이제 그 개구리를 이제 삶아서 요리를 하는 거죠. and then और वो लेते और उससे पकवान बनाते 정말 हैं 그 어떤 개구리의 요리법이지만 और ये मेंढक को पकाने का एक तरीका है ये, 사람의 마음의 세계와 많이 비슷한 것 같습니다. लेकिन लोगों का मन का दुनिया एक 우리가 좋아하는 이야기가 ऐसे 있죠. बातें जो हम सुनना पसंद 여러분 करते हैं 사람이 좋아하는 어떤 그 마음의 और 온도가 एक 있습니다. लोगों का एक तापमान है, मनो का तापमान है जो लोगों को 예, पसंद है 책망이나 우리가 못한다는 건 질책보다는 और फटकार और डांट से कई ज्यादा लोगों को 사람들 칭찬을 좋아합니다. स्तुति करना पसंद है। 넌 참 잘해. हाँ तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही होशियार है, 머리가 बहुत ही 좋아. दयालु है। 예, 이런 이야기 들을 때 뭘요 안 그래요 하면서도 좋아합니다. Even हालांकि वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी वो ये सारी Yeah. बातें उनको सुनना पसंद है। 조금씩 자기를 믿기 시작합니다. धीरे धीरे करके वो अपने खुद के ऊपर भरोसा 조금씩 करते 자기를 हैं 과신하기 시작합니다. और फिर उनके पास अति आत्मविश्वास होता है 어느 시점이 और 되면 एक ऐसे पल में 예, 더 이상 다른 사람 얘기를 못 듣게 돼. जो दूसरे कहते हैं वो और 네, सुनना 고립이 नहीं चाहते, 되면서 वे एकांतपन 예, महसूस 마음이 करते हैं, 갇혀버립니다. उनका मन बंद हो जाता है 예, 그러면 그때부터 소통이 막히고 और फिर और किसी से वो बात नहीं 예, कर 자기 सकते 속에 빠지면서 불행해지는 경우가 और वे 많습니다. अपने आप के अंदर गिरते और दयनीय होते हैं। 예, 성경에도 그런 사례가 굉장히 많죠. ऐसे बाइबल में बहुत सारे कहानियां 네, हैं, 압살롬이나 उदाहरण है, जैसे अब्सलोम हुआ, 또 अदोनिया 아도니아 हुआ। 이 사람들이 생각을 해보면 압살롬도 정말 사람들에게 늘 칭찬받았고 हाँ अब्सलोम को हमेशा उसकी स्तुति की गई 아도니아도 왕자로서 아버지에게 정말 책망을 받아본 적이 없이 और राजा ने अदोनिया को कभी फटकारा नहीं। 예, 아버지 डांटा 다윗이 네가 어찌 이런 일을 하였느냐 하고 섭섭히 이렇게 들어본 말이 없었습니다.
एक भी ऐसे समय नहीं था कि राजा दाऊद ने अपने बेटों को कहा कि क्यों ऐसा तूने ऐसा किया। 늘 잘했고 인정받았고 늘 장래가 이게 밝은 사람들이었지. हर समय उसने अच्छा किया और उसकी स्तुति की जाए गई और एक बहुत ही 근데 그들이 उज्जवल 결국에 भविष्य 어떤 था 길로 उसका। 갔습니까? लेकिन आखिर में कौन से रास्ते वो चले 아도니아도 반역을 꾀하다가 결국엔 죽임을 당하고 और अदोनिया ने विद्रोह किया और आखिर में मर गया। 압살롬도 자기를 신뢰하면서 아버지를 내쫓고 이제 많은 악을 저지르다 결국에는 죽임을 당합니다. और अब्सलम खुद ही ने भी अपने पिता को बाहर निकाला और बहुत बुरे काम करके वो आखिर में मर 자기를 गया। 과신한다는 굉장히 무서운 것이죠. इसलिए अति आत्मविश्वास पाना ये बहुत ही डरावना चीज है। 예, 나를 믿게 하는 그 마음들, वो मन जो खुद पे भरोसा करने 나를 का, 높여주는 그 생각들, अपने आप को स्थापित करने का मन, 그거 ऊंचा 정말 मन, Hi. 독과 같은 वो 성분. सब हमारे लिए जहर के समान है। 우리에게 고립을 가져옵니다. वो हमें एकांतपन 이제 세 लेकर आता है। 번째 고립이 오는 원인 중에 하나가 और तीसरा कारण है 소통과 대화가 부족해서 오는 경우가 많습니다. वो संचार की कमी के वजह से। 우리가 서로 이제 대화하고 마음을 저- 나눌 때 जब हम अपने मन को बांटते हैं और वार्तालाप करते 그때 हैं, 이제 우리가 마음이 서로 이렇게 비추어지고 마음이 보여집니다. उस वक्त सचमुच में अपने मन को देख सकते 그게 हैं। 막혀지면서부터 जब वो और नहीं होता 고립이 오는 거죠. तब एकांतपन होता है। 성경의 그 사무엘하 13장에는 암논에 관한 말씀이 있습니다. बाइबल में अम्नोन के बारे में कहानी है। 예, 암논은 그 어느 날 마음속에 굉장히 어두운 생각이 들어왔어요. और एक दिन एक अंधकार वाला सोच 예, अम्नोन के 암논은 अंदर आया। 왕자였죠. 예, 그 이제 그 여동생 다말이 있었습니다. और वो राजकुमार था और उसकी एक छोटी बहन थी 예, 그 तामार। 다말은 이제 배다른 여동생입니다. 엄마가 다른 여동생이. उसकी छोटी बहन है लेकिन उसके अलग माँ से है। 그렇지만 이제 그 남매입니다. लेकिन फिर भी एक दूसरे के वे 근데 어느 날 रिश्ते में 이 है। 암논의 마음속에 여동생 다말을 좋아하는 마음이 들어왔어요. एक दिन उसके पास ऐसा मन है कि उसके छोटे बहन तामार को प्यार करे। 예, 어떤 이성적인 마음들이 막 들어왔습니다. उसके पास ये मन था 음란한 마음이 들어왔습니다. और वासना वाला मन था उसका। 암논도 그걸 느낍니다. और अम्नोन 예, को 어디 महसूस 이야기를 हुआ। 할 수가 없죠. But he- लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकता। 부끄럽죠. He felt- उसको शर्म 그건 ना था। 아닌데 हाँ ये गलत है, 그건 안 되잖아. ये गलत है। 사탄이 계속 암논에게 그 생각을 넣었습니다. लेकिन शैतान लगातार अम्नोन के अंदर सोच डालते गया। 그때 암논이 그런 마음의 고민들을 누군가와 대화를 했다면 और अगर अम्नोन किसी को भी अपने मन की समस्या 그걸 कहता, 아버지에게 찾아가서 작은이 말씀을 드렸다면 अगर वो अपने पिता के पास जाके अपनी बात कहता वो, 아니면 형제들에게 내가 참 요즘에 이런 생각이 자꾸 일어나서 괴로워요. या कि अपने भाइयों के पास 내가 जाके 미쳤나 कहता कि ये 봐요. सोच मुझे बहुत सता रहे, 그렇게 मैं पागल हो 자기 जाऊंगा। 마음을 सही 이제 है। 이야기했다면은 Had he और इस तरीके से अपना मन अगर 쉽게 जाके 거기서 बात 이렇게 करता तो 벗어날 수 있는 길이 बहुत 열렸을 텐데 आसानी से ऐसे समस्या को सामना मात कर सकता। 암논은 그 लेकिन 이야기를 अम्नोन 하지 एक शब्द नहीं 않았습니다. बोला। 어둠을 가지고 있었습니다. उसने सिर्फ अंधकार के मन को अपने अंदर 그럼 우리 रखा। 마음 안에 어두운 생각을 갖고 있는 동안 जब वो अंधकार के मन को पकड़े रखा था, 그 생각 가만히 있지 वो 않습니다. वो स्थिर नहीं 그 रह 생각이 सकता था। 계속해서 자라나기 시작합니다. वो और अंदर बढ़ता है, 커지고 बढ़ता गया, 힘이 세지고 मजबूत होता गया 그러면서 이제 암논은 그 다음에 병이 들었습니다. और आखिर में अम्नोन बीमार गिरा उसके वजह से। 너무 그 다말을 막 좋아하는 마음속에 빠져버리니까 He और was तमार के प्रेम में इतना गिरा था वो, 병이 찾아와 버렸어요. क्योंकि उसके अंदर बीमारी आ गई। 그리고 나서 그 다음에 간교한 친구 요나답이 찾아왔죠. और उसका उस वक्त उसका शातिर दोस्त जोनादाब उसको मिलने के 예, 그 लिए आया। 간교한 친구가 이제 와서 어떻게 다말을 이렇게 강간할 수 있는지를 가르쳐 줬습니다. उसने कहा कि कैसे तू वो जा सकते हो कि तमार को रेप कर सकते हैं। वो 예, बहुत 아주 ही 무서운 이야기죠. डरावना चीज था वो। 결국 그 다말을 범하게 되고 लेकिन आखिर में वो तमार को 그리고 को 다말을 रेप करता है। 이제는 보기 싫어 내쫓아 버립니다. लेकिन आखिर में वो उसको देखना नहीं चाहता और उसको से 다말 लात मार के भगा देता है। 너무너무 막 분한 और 거죠. फिर वो और उसको देखना नहीं चाहता, उसको बाहर निकालता है। 예, 강간을 당한 것도 억울했지만 और अभी तमार बहुत दुखी है। 이제 그 오빠가 자기를 정말 그 보기 싫어서 내쫓는 그게 더 억울했습니다. वो दुखी है क्योंकि उसका रेप हुआ था इसलिए, लेकिन अभी उसको और दुख हुआ क्योंकि उसके 쫓겨나서 भाई 이제 ने उसको अभी 울면서 बाहर 자기 निकालवा 친오빠 दिया है। 압살롬에게 갑니다. और वो रोते रोते वो अपने भाई अब्सलोम के पास जाती 예, 압살롬하고 이야기를 하죠. है और उसके साथ वो बात करती है। 압살롬이 말하기를 और अब्सलोम ने कहा, 다말아 다말. 다말에게 이야기하지 마. ये बात किसी से मत करना। 많이 있어. Just- 그때부터 압살롬이 복수의 칼을 갑니다. और अभी तब से अब्सलोम के अंदर बदले की आग 2년 जैसे बढ़ 뒤에 गई। 그 암논을 살해합니다. और 2 साल बाद उसने अम्नोन को मार दिया। 암논도 고립된 사람이고 और अम्नोन भी एकांत पर 압살롬 गिरा था। 역시도 야 이거 아무에게도 말하지 마. और अब्सलोम खुद भी वो एकांत में गिराते ही कहता है कि 자기 किसी को मत 마음 बोलना। 안에 그 복수심을 키워가는 것입니다.
उसके मन में वो बदले की आग वो बढ़ा रहा है 그러면서 결국에는 형제를 죽이고 और आखिर में अपने भाई को मार देता है 살인자가 되면 वो एक खूनी बनता है 너무너무 불행하고 너무너무 비참한 और 것이. बहुत दयनीय बहुत ही दयनीय 예, जीवन जी 이렇게 마음의 고립이 왔을 때 और जब ऐसे एकांत 대화와 मन आता 소통이 है 없는 동안 그 고립에서 벗어나지 못하죠. जब आप वार्तालाप नहीं करते आप उस एकांत से आप आजाद हो 한 नहीं 번은 이제 सकते 어떤 박사님이 그 연구한 아주 좋은 그 이제 연구 발표가 있었는데 और एक दिन एक वैज्ञानिक ने खोज किया 예, 쥐에 대한 실험과 वो चूहों के ऊपर था 또 이제 이렇게 베트남 전쟁에 갔던 많은 군인들이 거기에 마약에 중독이 됐다가 가정에 돌아왔을 때 그 마약에서 벗어나는 그런 부분에 대한 이야기입니다. और विषय था कि उन अमेरिकी सैनिक के बारे में जो वियतनाम के युद्ध में गए हुए थे जो बहुत ज़्यादा नशे के लत में थे लेकिन उन्हें जब वे अपने 잠깐 घर 이 को 영상을 लौटे 한번 तो वे 보시죠. और नशे के लत में नहीं थे What causes, say, heroin addiction? This is a really stupid question, right? It's obvious. We all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But there's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have colored balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines. The Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. 예, 잘 보셨습니까, 여러분? क्या आप लोगों ने वीडियो को बहुत मजा 우리가 이 उठाया 영상 속에서 우리에게 가르쳐 주는 게 많습니다. और इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं 사람들은 그 약물이 우리에게 중독을 가져다 준다 이렇게 보통 생각했지만 अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो नशा जो है वो लत 지금 본 आती है 것처럼 그 베트남 전쟁에서 많은 사람들이 헤로인을 했습니다. और अगर हम देखें कि ये वियतनाम युद्ध में बहुत सारे सैनिक ने जो है हेरोइन जो 전쟁이 है चरस लिया 끝나고 था 다시 본국으로 돌아왔을 때 그럼 많은 마약 중독자들이 생길 거라고 염려를 했는데 और बहुत सारे लोग चिंतित थे कि अगर एक बार घर जाने के बाद बहुत सारे से नशे से 사랑하는 लत 가족들의 हुए 품에 व्यक्ति हो गए लोग 돌아와서 हो गए 그들이 행복한 마음 안에 교류할 때 95% 이상이 그 약물에서 다 벗어나게 됐다는 것입니다.
लेकिन 95% लोग जो अपने घर गए और अपने प्यारे कुटुंबों के साथ मिल गए तो ये लत से वो छुटकारा पाए। 그러면 소통과 이 교류라는 게 정말 우리의 마음을 굉장히 행복하게 해줍니다. और संचार जो है, वार्तालाप सचमुच में हमारे 대화할 मनों 때 में 우리 आनंद लाता 마음을 है 정말 갇힌 곳에서 꺼내주는 겁니다. और सचमुच में हमारे मनों को हमारे एकांतपन से बाहर 저희들은 लेकर 이제 आता है। 한국에서도 캠프를 열고 해외 수십 개 나라에서 해마다 이제 월드 캠프를 개최하고 있습니다. और कोरिया में हम वर्ल्ड कैंप करते हैं और बहुत सारी दुनिया में वर्ल्ड कैंप करते हैं। 캠프를 하면서 이제 우리가 말씀도 듣고 और कैंप जैसे होता है कि हम वचन को सुनते हैं 합창단의 공연도 우리가 듣고요. और कॉयर के परफॉर्मेंस को हम सुनते हैं। 또 아카데미도 운영하고 बहुत से अलग अलग एकेडमीज करते 그러면 हैं 서로 이제 함께 서로 다른 곳에서 온 친구들이지만 마음의 대화하고 소통하는 시간들을 많이 갖습니다. और हालांकि सभी लोग दुनिया के अलग अलग भाग के से है लेकिन हम एक दूसरे 또 से 한 번은 वार्तालाप करते हैं और 이제 एक दूसरे 오래전 से मन को जोड़ते 이야기지만 हैं। 한국에서 이제 캠프를 할 때 ये लंबे समय पहले था लेकिन जब कोरिया में जब हम कैंप कर रहे थे 외국에서 한 여학생이 왔습니다. और विदेश से एक विद्यार्थी था 그 이제 반에 교사 선생님들께서 10명, 15명 학생들과 이제 한 주간을 지내는데 और हर एक क्लास के जो टीचर जो उनके नीचे में 15 विद्यार्थी और एक हफ्ते के लिए गुजारते हैं 한 여학생 유독 이렇게 교류가 되지 않았습니다. लेकिन एक विद्यार्थी जो अपना एक विद्यार्थी ने 번역의 वो 마음을 अच्छी 열지 तरह से वो 않았어요. वार्तालाप नहीं कर सकी थी वो अपना 그래서 मन को 이제 भी नहीं खोल 우리 सकी थी 단체 설립자 목사님께 그 여학생을 이렇게 데리고 왔습니다. इसलिए उस टीचर ने इस संस्था के फाउंडर के पास लेकर आए 목사님 이 여학생 전혀 이렇게 마음이 움직이지 않습니다. और पास्टर ये विद्यार्थिनी का मन वो बिल्कुल भी किसी 목사님께서 से मिलती 한번 जुलती नहीं है। 상담을 좀 해주시면 좋겠습니다. पास्टर ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उससे बात करते तो। 그래서 목사님께서 이제 여학생을 이렇게 앞에 앉혀두고 대화를 했습니다. और पास्टर ने ये विद्यार्थिनी के साथ बैठकर उनके साथ बात किया 여학생 막 굉장히 처음에 강팍했습니다. और शुरुआत में वो बहुत कठोर थी। 아 목사님 저는 그냥 이 캠프 마치면 집에 갈 हाँ पास्टर 거예요. आपको पता है ये कैंप खत्म होने के बाद मैं घर जाने वाला हूँ मेरे बारे में चिंता मत 방관하지 करो। 마세요. 어, 바위에다가 계란 던지는 것 같아요. It's like वो ऐसे है कि पत्थरों के 저는 ऊपर 전혀 안 अंडे को 깨질 फेंकना 거예요. है। मैं कभी 안 बदलने 바뀝니다. वाला नहीं हूँ। मैं कभी 네, 막참 그렇게 강팍했습니다. और वो बहुत ज्यादा कठोर मन की थी 예, वो। 목사님께서 하나하나 이야기를 하시다가 लेकिन जैसे पास्टर एक दो चीज 이 बातें कहते जा 여학생이 रहे थे 이제 지난 날들의 이야기를 시작했습니다. और ये विद्यार्थिनी अपने 학생은 어떤지 교회를 भूतकाल 다녔는데 के बारे में वो बात करने लगी। ये विद्यार्थिनी चर्च 교회 में जाया 안에 करती 이제 많은 청년들이 और 있어요. उस चर्च में बहुत सारे युवाएं थे 그 청년에 이제 인도하는 어떤 사람에게 이제 이렇게 강제로 추행을 당했다. लेकिन यूथ ग्रुप के लीडर ने उसके ऊपर 그 बलात्कार 상처가 किया था 너무너무 컸어요. और ये बहुत गहरा दर्द हुआ था उसके 근데 मन 더 में। 어려운 것은 लेकिन सबसे बड़ा 더 네. 상처가 됐던 것은 दर्द ये था कि 예, 자신의 그 어떤 결백을 전혀 들어주지 않고 कोई भी उसको सुनता नहीं था 오히려 그 청년의 거짓말을 사람들이 인정해주고 और लोगों ने उस यूथ लीडर के उस झूठ 오히려 के ऊपर 자기를 भरोसा किया 굉장히 나쁜 여학생으로 취급해 버렸어요. और सभी लोगों ने उसके प्रति कहा कि वो बुरी 그때 이 स्त्री है 여학생은 다짐을 했습니다. और उस समय उसने सचमुच अपने मन को 이를 बंद कर दिया। 갈면서 उसने अपने दांत को पिसा 다시는 마음을 열지 않고 और मैं अपने मन को But कभी mood도 नहीं 믿지 खोलने 않을 वाली, मैं 거야. किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने वाली। Any- 그때부터 마음을 Anyone 굳게 굳게 닫았습니다. और उसने अपने मन को पूरी तरह से बंद कर दिया 그 이제 가족들이 너무 안타까워서 और वो परिवार बहुत बुरा लगा उसके 캠프에 लिए। 이제 보낸 거죠. उसके परिवार ने उसको इस कैंप में भेजा। 캠프에 와서 마음을 열고 하나님 마음을 받고 그렇게 살기를 바랬는데 वे चाहते थे कि वे अपने मन को खोले ताकि वो परमेश्वर के मन को 전혀 변하지 स्वीकारे 않았어요. और वो बदल जाए। 이야기를 다 들으시고 목사님께서 이야기를 했습니다. उसके सब बोलने के बाद पास्टर ने जवाब दिया 그래 너의 얘기를 들어보니까 너무 가슴이 아프구나. और तुम्हारी इस कहानी सुनकर मैं बहुत 내가 सचमुच में 생각해도 बहुत 정말 दुखी हूँ 그 청년 너무 और 잘못됐어. मैं विश्वास करता हूँ कि युवा ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ में 그렇지만 너도 마음을 열어야 돼. लेकिन फिर भी तुम्हें अपने मन को खोलना है। 예를 들어서 물이 이제 많이 불어나 홍수가 나서 너희 집이 다 떠내려갔다고 해보자. समझो उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और पूरा घर तुम्हारा उसमें तहस महस हुआ 그래서 부모님도 떠내려가고 동생들 다 떠내려가 죽었다고. और समझो कि उस बाढ़ की वजह से तुम अपने माता पिता को खो बैठी 그럼 너는 이제 물이 너의 원수처럼 여겨질 거야. So- और अभी तुम्हें लगता है कि ये पानी ये जो बाढ़ तुम्हारा शत्रु है 그러나 네가 물을 사용하지 않으면서 살 수는 없는 거야. लेकिन बिना पानी को इस्तेमाल किए तुम अपना जीवन जी नहीं सकते। 오늘 예를 들어서 집에 불이 나서 उदाहरण के तौर पे तुम्हारे घर पे किसी आग 사랑하는 लग 사람들이 गई 다 불에 의해서 죽었다고 해. और तुम्हारे सारे प्यारे जो लोग उस आग में 그럼 मर गए। 당연히 그 불은 너에게 원수와 같은 존재지. Then हाँ फिर हाँ वो आग तुम्हारे लिए तुम्हारा शत्रु है 그렇지만 우리가 불을 사용하지 않으면서 살아갈 수는 없는 거야. लेकिन बिना आग इस्तेमाल किए तुम जी नहीं सकती।
네 마음에 상처가 있고 जी हाँ, तुम्हारे मन के ऊपर 너에게 जख्म है 정말 잘못한 일들을 한 사람들이 और ऐसे 있지만 भी लोग हैं जो बुरे के तुम्हारे साथ 우리는 में, 마음을 열어야만 살 수 있어. लेकिन जब हमने अपने मन को खोलते तभी हम जी सकते। 자세하게 설명을 했습니다. विस्तार में उसको बताया, 대화를 나누고 उन्होंने उससे बातें की 하나님의 마음을 펴서 증거해주고 और उन्होंने परमेश्वर के वचन को खोल के उसके सामने 그런 बताया। 동안 여학생의 마음이 부드러워지면서 열려졌습니다. और ऐसे करने से के बाद वो विद्यार्थिनी का मन खुल गया और बहुत नरम हुआ। 강한 그 마음의 상처로 인한 고립이 왔지만 जी हाँ, उसके मन में बहुत बड़ा एक एकांतपन या कि बहुत बड़ा 지혜를 जख्म था। 가진 하나님의 종과 대화와 소통할 때 거기서 벗어나는 것입니다. लेकिन जब उसने परमेश्वर के दास के साथ में ये वार्तालाप किया या कि बात किया, जिस परमेश्वर के दास के परमेश्वर का मन था, 오늘 वो सारी बातों से 저는 वो 본문을 आजादी 잠언 उसने पाया। 27장을 읽었지 않습니까? Today, आज मैंने नीति वचन का 27 अध्याय पढ़ा। 여기 Seven. 철이 철을 날카롭게 하는 것처럼 ऐसा लगे जैसे लोहा लोहे को चमका 여러분 देता है 철과 철이 계속 और 부딪히면서 जैसे लोहा लगातार लोहा से मिलता है और वो 날카로워지는 것처럼 और वो तेज होते जाता है, 예, 사람이 그 친구의 얼굴을 빛나게 한다고 했어요. वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से 예, चमका देते हैं। 마음과 마음이 자꾸 부딪혀졌을 때 और जब मन जब मिलता है, 예, 마음이 밝아지고 Your- 마음이 흐르면서 आपका मन जो है बहुत ही उजालित होता है और मन 마음이 का बहाव 굉장히 होता है 영적으로 건강해지는 것입니다. और आत्मिक रूप से आपका मन बहुत ही सेहतमंद 많은 होता है। 젊은이들을 우리가 리더로 이끌어주기 위해서는 और बहुत सारे युवाओं को अगुवे बनाने के लिए 젊은이들이 정말 자기에게서 이렇게 벗어나서 और वे अपने आप से आजाद 고립된 होना 곳에서 चाहिए, 벗어나서 एकांतपन से 이들이 आजादी होना 정말 चाहिए। 소통과 대화와 교류가 이루어질 때 और जब वे संचार और अदल बदल करते हैं, 젊은이들은 리더로 정말 얼마든지 वे 성장할 बहुत 수가 बड़े 있습니다. अगुवे में उनका बदलाव हो सकता है। 그래서 이 교회 안에 있는 많은 젊은이들과 이 대화하는 게 굉장히 중요합니다. इसलिए चर्च में ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारे युवाओं के साथ आप बात करना 예, चाहिए। 좋은 일이든 어려운 일이든 나쁜 일이든 서로 마음을 꺼내고 대화한다는 건 굉장히 중요합니다. हालांकि वो अच्छा है या बुरा है या कठिन चीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वार्तालाप करने के लिए, बात 예, 서로 마음을 소통하는 동안 करने के लिए। जब एक दूसरे से वे वो बातें 또 करते हैं, 자기를 믿는 데서부터 돌이키는 동안 जब वे अपने खुद से भरोसा करने से वो फिर 또 जाते हैं, 부담스럽지만 부담을 부딪혀 나가는 동안 और हालांकि वो सामने बोझ है, लेकिन वो बोझ का जब वो सामना करते हैं, 예, 젊은이들의 마음에 강해지고 그들이 밝아지면서 리더로 잘 자라날 수 있습니다. उनका मन बहुत ही मजबूत होगा, उजालित होगा और बड़े लीडर्स 이 बन 방송을 जाएंगे। 시청하시는 우리 목사님들이나 또 청소년 이끄는 많은 리더분들께서도 이런 방향으로 그들에게 다가가서 훈련한다면 굉장히 मैं 좋은 विश्वास 결과를 करता 얻을 हूँ कि 것입니다. आपको बहुत महान अंजाम मिलेगा जब युवाओं को ऐसे दशा में आप जब 정말 चलाओगे। 이런 청소년들에게 관심을 가지시고 또 마음으로 그동안 열심히 또 수고했던 많은 분들에게 또 और 감사를 मैं बहुत ही 드리고요. धन्यवाद देता हूँ बहुत सारे लोगों के प्रति कि ये सारे युवाओं को बहुत ही मेहनत से चला रहे, मार्गदर्शन 그리고 कर रहे। 하나님께서 이 젊은이를 바꾸는 이런 일에 또 함께하는 모든 분들을 축복하실 줄 믿습니다. और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आशीर्वाद देगा सारे लोगों को जो युवाओं को बनाने के पीछे 감사를 हैं। 드립니다. बहुत बहुत धन्यवाद। 감사합니다. धन्यवाद।